Good morning, students. Standard 6 subject General Science, lesson number 8, our skeletal system and the skin. Students, in last online lecture, we learned the skeletal system and what is fracture, what is X-ray technology, types of bones, and the structure of a bone. Today we are going to learn about a human skeletal system in detail. See this figure which shows the human skeletal system. The first part is called skull, then this is the rib cage, and these are two arms. This is spinal cord, or you can say spine, and these are the legs. This whole structure is called the parts of the human skeletal system. The human skeletal system can be divided into two parts, the axial skeleton and the appendicular skeleton. Now let us study what is axial skeleton and appendicular skeleton. Very first, human skeletal system is divided into two parts, axial and appendicular skeleton. Axial means vertical skeleton and appendicular means very few bones, like the bones of arm and legs are called appendicular skeleton. Let us study this. Axial skeleton consists of the skull, the spine, and the rib cage. See this, the skull, then these spines and rib cage is called axial skeleton. These are situated symmetrically along the central vertical axis of the body. ये कहाँ पर सिचुएट होते हैं, सेंट्रल लोकेशन में होते हैं, इसलिए इसका बोला जाता है एक्सियल स्केलेटन. What is appendicular skeleton? It is made up of the bones of the upper and lower limbs, that is arms and legs, on either side of the central axis. ये जो hands, that is arms and legs जो है, इसको बोला जाता है appendicular skeleton. As our body grows, the size and length of our bones increases. Such changes in size and length can be seen in children according to age. However, the body continues to grow only up to a certain limit. The bones of taller people are longer. Understood? Let us study in detail the axial skeleton. The first part of axial skeleton is skull. The skull is formed by the bones of the head and face. स्कल किससे बना होता है, द बोन्स ऑफ हेड एंड फेस. जो चेहरा है और जो हमारा सिर है, हेड है, इन दोनों से ही स्कल बना होता है. द बोन्स ऑफ द स्कल्स आर फ्लैट एंड स्ट्रॉन्ग. देयर आर अल्टुगेदर 22 बोन्स इन द स्कल. हमारे टोटल पूरे स्कल में कितने बोन्स होते हैं, 22. रिमेंबर इट. 8 in the head and 14 in the face. That 22 are divided into 8 and 14. 8 are in head and 14 are in face. ऐसे होते हैं total 22 bones. Except for the lower jaw, none of the bones of the skull can move. It is very important. ये जो हमारा lower jaw होता है, देखो जब भी हम खाना खाते हैं, किसी से बात भी करते हैं, तो हमारा सिर्फ लोअर जॉ ही नीचे ऊपर होता है, यही मूवेबल होता है. बाकी पूरा हमारा स्कल मतलब कि फेस का कोई भी बोन, कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाता है. अंडरस्टूड? एक्सेप्ट फॉर लोअर जॉ, नन ऑफ द बोन ऑफ द स्कल कैन मूव. इसमें से कोई भी मूव नहीं होता है. अब ट्राई करके देखो, जब भी आप खाना खाएंगे तो ऊपर का जो ये जो ऊपर के दांत होते हैं इसको अपर जॉ बोला जाता है, और जो नीचे के दांत होते हैं उनको लोअर जॉ बोला जाता है. इन मराठी जबड़ा. ओके, सो ये हम जब भी बात करेंगे, खाना खाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ ये लोअर जॉ ही हमारा हिलता है. ट्राई इट. ओके, विच ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी डज द स्कल प्रोटेक्ट? वेरी सिंपल, द ब्रेन. हमारा स्कल कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है? ब्रेन को.
Okay, let us study about rib cage. Feel the left and right side of your chest with your hand or fingers. How many bones can you feel altogether on the two sides? आप आपके लेफ्ट और राइट साइड को हाथ रखकर चेक कर सकते हैं, आपको रिब केज आपके चेस्ट में दिखेगा, मतलब फील होगा। तो वहां पर कितने बोन्स आपको दिखते हैं, लेट अस स्टडी। चेक इन द सेंटर, हाउ मेनी बोन्स डू यू फील? The cage-like structure in the chest is called the rib cage. What is rib cage? The cage-like structure, पिंजरे जैसा जो structure होता है उसको बोला जाता है rib cage. In the chest, there is one vertical flat bone called the sternum. 12 pairs of flat bones called the rib cage are joined to its sideways. ये जो सेंट्रल पार्ट दिखाया गया है फिगर में, इसको बोला जाता है स्टर्नम। और ये जो उसके दोनों भी साइड जो केज लाइक स्ट्रक्चर दिखाया गया है विच इज मेड अप ऑफ 12 पेयर्स, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 24। ये 24 दोनों साइड मिलाकर बोन से, और ये स्टर्नम 25, इसे 25 बोन से हमारा क्या बना है, रिब केज बना हुआ है। द स्पाइन, बैकबोन और वर्टेब्रल कॉलम। लेट्स स्टडी द स्पाइन और द वर्टेब्रल कॉलम। सी इज द वर्टिब्री एंड बैकबोन और वर्टेब्रल कॉलम। ये कहां से कहां ज्वाइन होता है? इट इज द लॉन्गेस्ट बोन। ओके, इट इज स्टार्ट विद अवर हेड। ओके, let us study about the spine. The spine is formed by padlock shaped bones placed straight one above the other. एक के ऊपर एक वो straight form किए गए हैं। There are altogether 33 bones in the spine, each called a vertebra. ये जो बोन्स आपको दिख रहे हैं टोटल कितने होते हैं? 33, और हर एक बोन को बोला जाता है वर्टेब्रा। These bones are arranged one above the other flexibly. The spine protects the spinal cord that originates from the brain. इसको ही स्पाइनल कॉर्ड बोला जाता है, जो कहां से ओरिजिनेट होता है, कहां से स्टार्ट होता है? हमारे ब्रेन से स्टार्ट होता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाट वुड हैव हैपन इफ यू और वी डिडंट हैव अ बैकबोन? अगर हमें बैकबोन नहीं होगा तो क्या हो सकता है? अगर हमें बैकबोन नहीं होगा तो हम सीधे बैठ नहीं सकते, हम सीधे खड़े नहीं रह सकते, हम सीधे चल नहीं सकते। ये सब किसी की वजह से पॉसिबल है? ड्यू टू बैकबोन। इसको मराठी में बोला जाता है पाठीचा कणा। Let us study in detail about the appendicular skeleton. The human body has two arms and two legs, correct? हमारी ह्यूमन बॉडी को कितने आर्म्स होते हैं? हाथ होते हैं दो, और पैर भी कितने होते हैं? दो। The different parts of the arms and legs have several bones which are connected together by joints. हमारे हाथ और पैर को अलग अलग बोन्स कनेक्ट होते हैं, इसको बोला जाता है joints. One important information is given. Do you know there are 3 bones in each of ears? Of these, the stirrup is the smallest bone in our body. It is as small as grain of rice. देखो हमारे ईयर में 3 बोन्स होते हैं, उसमें से सबसे जो छोटा सा बोन होता है उसको बोलता है स्टायरप। ये कैसे दिखता है, इसका साइज कैसे हो सकता है? जो हमारा राइस होता है, राइस उसका एक जो सिंगल दाना होता है उसी तरह वे दिखेगा। इट्स शेप इज लाइक दैट ऑफ अ स्टायरप। In the human body, the longest and strongest bone is the thigh bone or the femur. हमारे बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सा होता है? देखो ये यहाँ पर दिखा है थाई, ये जो लॉन्गेस्ट बोन होता है ये सबसे स्ट्रॉन्ग बोन होता है। ओके, now we have to learn about the joints. Joints are the places where two or more than two bones are connected to each other. किसे हम जॉइंट बोलते हैं? जहां पर हम एक दूसरे को कोई भी पार्ट ज्वाइन करते हैं उसको हम जॉइंट बोलते हैं। वैसे हमारे बोन्स में जॉइंट्स आर द प्लेसेस वेयर टू और मोर
देन टू बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, दो और दो से ज्यादा बोन्स जहां पर कनेक्ट होते हैं उसको बोला जाता है जॉइंट्स। जॉइंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप्स के जॉइंट है? दो टाइप्स के। फर्स्ट वन इज अ मूवेबल जॉइंट, सेकंड वन इज अ immovable joint. Movable joints, bones can move. Example, bones of arms and legs. जो हमारे बॉडी के बोन्स मूव होते हैं, हम इसको अलग अलग डायरेक्शंस में घुमा सकते हैं, हिला सकते हैं, उनको बोला जाता है मूवेबल जॉइंट्स। लाइक आर्म्स एंड लेग्स, हाथ और पैर। इमूवेबल जॉइंट्स, जो मूव नहीं कर सकते, जो घूमते नहीं है, उनको बोलता है इमूवेबल जॉइंट्स। बोन्स कैनॉट मूव। एग्जांपल, बोन्स ऑफ द स्कल। मैंने अभी आपको सिखाया कि हमारा जो स्कल होता है, हमारा जो हेड होता है, उसमें सिर्फ लोअर जॉ हमारा हिलता है, बाकी का सब इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। लेट अस स्टडी द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। First one is a hinge joints. This type of joints allows the movements of bones only in one direction. ये जो हिंग जॉइंट्स होते हैं वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव हो सकते हैं। इट मूव्स इन अ 180 डिग्री एंगल। एग्जांपल, द एल्बो एंड द नी जॉइंट्स। देखो यहाँ पर दो जॉइंट्स दिखा है, इसको हिंग जॉइंट्स बोलते हैं। ये हमारा है एल्बो और नी जॉइंट्स। अब इसको आपके हाथ और पैर को भी हिला के देख सकते हैं। आपका जो हाथ है वो देखो मैक्सिमम 180 डिग्री तक जाता है, ऊपर से लेकर आप नीचे तक उसको ला सकते हैं 180 डिग्री में। करेक्ट। वैसे आपका जो पैर है, जब आप खड़े रह के इसको मूव करके देखो, आपका पैर 180 डिग्री तक मैक्सिमम ऊपर आ सकता है। सबका 180 डिग्री तक नहीं आएगा, लेकिन 180 डिग्री तक आ सकता है। वैसे ही पीछे भी वो मूव हो सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं मूव होगा। इसलिए इनको बोला जाता है हिंज जॉइंट्स व्हिच कैन मूव अप टू 180 डिग्री एंगल। Second one, ball and socket joints. In this type of joints, the bones can move in two or more directions in a 360-degree angle. Example, shoulder and hip joints. अभी वही एक्टिविटी आप रिपीट करके देख सकते हैं। आपका जो हाथ है, हैंड है, वो आप पूरा रोटेशन में, हम जब मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हैं तो हम उसको फ्रंट रोटेशन, बराबर, फॉरवर्ड रोटेशन और बैकवर्ड रोटेशन जो हैंड का करके देखते हैं, गोल गोल घुमा के देखना, उससे आपको पता चलता है कि हमारे शोल्डर में कौन सा जॉइंट लगा होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो ऐसे दिखता है, देखो ये जो सर्कुलर शेप है, बॉल लाइक अ बॉल स्ट्रक्चर, वो उसमें से इसे रोटेशन को मूव करता है। देखो ये हमारा शोल्डर का एक्चुअल स्केलेटल सिस्टम का पार्ट यहाँ पर दिखाया हुआ है। ओके, नेक्स्ट वन, ग्लाइडिंग जॉइंट्स। इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स, the bones can only slide over each other. Example, wrist and ankle joints. ये जो ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं, इसमें क्या होता है, सिर्फ जो बोन्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर उसका सहारा होकर प्लेस किए जाते हैं। Some types of joints like, see, you can see here the joints of wrist and ankle. जो हमारा wrist होता है, मनगट, करेक्ट, वहां पर ऐसे जॉइंट्स हो प्लेस किए होते हैं। Okay, this is all about the human skeletal system and the parts of the human skeletal system. Thank you.